Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का session start करते हैं. And in today's session, we are going to work on the expected questions from the chapter that is called Security and Ethics. So we need to work on this chapter. आज हम इस chapter की बात करेंगे, Security and Ethics. And we are going to solve as many questions as we can. जितने भी questions हैं almost हम लोग सारे questions ही class के अंदर क्या करेंगे, perform करेंगे बच्चों. So without wasting any time, starting with the first question, and this question is of logic gates. पहला सवाल हमारे पास यहाँ पे logic gates का है. I thought this is one of the good question, और ऐसे ही ये एड ऑन हो गया था यहाँ पे, तो लेट्स सॉल्व. पहले ही एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू मूव अलोंग. तो ये बता रहे बच्चों, इज ओवर एज ऑफ 18. सो मैं ऊपर टेबल में आया, मैंने देखा द पैरामीटर इज ए ओवर 18 एंड द वैल्यू इज सेट टू 1, एंड व्हेनेवर द वैल्यू इन द टेबल इज 1, सो वी टेक सिंपल इनपुट. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आई टुक a simple input over here. Now, the next point is has been recommended by a pre-existing member. And again, I went to the table, recommended, the value is 1. So, the parameter is B. So, ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में बच्चों क्या हो रहे हैं? They are being AND. It's written, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं. सो मैंने यहाँ पे इन दोनों को एंड करवा दिया. नाउ अगला पॉइंट आप लोग बताएंगे बच्चों मुझे. द नेक्स्ट पॉइंट इज ईदर वर्किंग फुल टाइम और इज रिटायर्ड बट नॉट बोथ. सो वर्किंग फुल टाइम द पैरामीटर इज सी, retired the parameter is D, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? You can write to Mac chat over here. Mac chat में लिख के जरा मुझे आंसर बताएं सेकंड स्टेटमेंट का. Which gate should I apply? कौन सा गेट अप्लाई करूं मैं यहाँ पे? Is working full time or is retired but not both. Okay, we have an answer. Let me check. Perfect फातिमा, जबरदस्त बेटा, excellent, अमेजिंग, वंडरफुल. और आई होप आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैं जब भी ज्यादा तारीफ करता हूं, दिस मींस देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग रॉन्ग. सो देखिए, इज वर्किंग फुल टाइम और इज रिटायर्ड बट नॉट बोथ. द पॉइंट दैट वी नीड टू कैटर ओवर हियर इज नॉट बोथ. सर क्या मतलब? ये बोलना चाह रहा है अगर वर्किंग फुल टाइम है और रिटायर्ड नहीं है तो आपका आंसर आना चाहिए 1. अगर वर्किंग फुल टाइम नहीं है लेकिन रिटायर्ड है, आपका इस केस में भी आंसर आना चाहिए 1. लेकिन अगर दोनों हैं तो आपका आंसर 0 आना चाहिए. तो अब मुझे बताएं विच गेट शुड वी गो फॉर, कि 0 1 के ऊपर 1 आए, 0 1 के ऊपर 1 0 के ऊपर भी 1 हो, and 1 1 के ऊपर आपका आंसर 0 आना चाहिए. So बच्चों, this is the question of XOR gate. The gate that we are going to apply over here will be a XOR gate. आज तक कभी XOR gate का क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम के अंदर, and I think this is the best time. Examiner might give you इस साल 2022 मई जून के वो XOR gate का इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दे सकता है. तो आप लोग को पता है XOR gate में देखो, ये स्टेटमेंट ट्रू हो या फिर ये स्टेटमेंट ट्रू, लेकिन अगर दोनों ट्रू होंगी तो रिजल्ट विल बी 0, and that's the characteristics of XOR gate that we have. So C and D, and they both are being XORed. Oops. Now ये दोनों गेट आपस में बच्चों क्या हो रहे हैं? दे आर बीइंग एंड. तो मैंने इन दोनों गेट्स को नाउ एंड कर दिया.
and this is equal to x, and we are done 3 marks. So I really like this question बच्चों, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये सवाल, although this was not from your level, but still मुझे एक सवाल अच्छा लगा था, तो ये आप लोग के एग्जाम्स में आना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन. आई वुड बी रियली हैप्पी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड. अब बच्चों आ जाएं, अब तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बिकॉज सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आ गए एंड दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, मैक्स चैट के ऊपर लिख के बताते रहेगा अपने आंसर, सो दैट आई कैन कीप अ ट्रैक कि आप सब मेरे साथ मूव ऑन कर रहे हैं. इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, एंड दीज आर द वर्ड्स दैट आप लोग पिक कर सकते हैं. एंड फातिमा इज द फर्स्ट वन. फातिमा ने बता दिया कि सर हैकिंग. परफेक्ट. रूहान, ठीक है, रूहान ने भी बता दिया सर हैकिंग. आसान था रूहान बेटा. अगले पार्ट का अगला ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये तो पूरा क्वेश्चन ही आसान है, अगले क्वेश्चन के अंदर पूछेंगे, ठीक है ना. अच्छा जी, डैश आर द प्रोग्राम्स दैट सेल्फ रेप्लिकेट, सो वायरसेस. अच्छा फातिमा बेटा कोशिश करेगा कि यहाँ पे अगर एग्जामिनर ने जो वोकैबुलरी यूज की है दैट इज वायरसेस, तो वायरसेस ही लिख दें, ठीक है. ऑल्दो वायरस इज फाइन, बट जो एग्जामिनर ने वोकैबुलरी यूज की है, ट्राई टू राइट दैट एग्जैक्ट वोकैबुलरी, ठीक है. अच्छा, दिस थर्ड वन, डैश इज वेयर अ यूजर सेंड लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल. तो मुझे तो अपना आंसर यहीं पे मिल गया बच्चों. डैश इज वेयर अ यूजर सेंड legitimate looking emails. Rohan, no. Whenever examiner is talking about fake emails, he is referring to phishing, not farming. Farming is fake websites. देखिए यही फायदा है बच्चों फास्ट ट्रैक का, रिवीजन हो रहा है आप लोग का. अब याद रखना है रूहान, भूलना नहीं है. Whenever examiner is talking about fake emails, this means examiner बात कर रहा है किसकी? Phishing की. And when the examiner is talking about the websites, fake websites, then we are going to write farming. ठीक है. So this is phishing. मैंने आप लोग के पास यहाँ पे लिख दिया, this is phishing because he was talking about fake emails. अच्छा जी, moving further forward, dash software that monitors key presses on the user's keyboard and relies on the information back. So spyware. And the last one is dash is a malicious code or software installed on the hard drive of a user's computer or a web server. The code or the software will redirect the user to a fake website. So this is अब ये क्या होगा? This will be, ये होगा आपके पास farming because examiner is talking about fake website. ठीक है भाई, fake website के बारे में बात की जा रही है. Now moving forward, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब क्वेश्चन नंबर 3. अभी बता रहे कि data can be corrupted. You need to describe the reason for data being corrupted and how you can prevent this corruption. So I can go with, मैं reason के साथ जा सकता हूँ. data corruption reason can be a virus and prevention can be antivirus. Software we can use. Data loss. Data loss आप लोग बताएं. What could be the reason for data loss? अच्छा, all the reasons should be different. ये नहीं करेगा ऊपर भी वायरस लिख दिया नीचे भी वायरस लिख दिया. No, all the reasons should be different. So अगर आपके पास data loss हो रहा है, so sir, do we need to elaborate in this question? Yes, थोड़ा बहुत फातिमा बेटा मैं कर देता हूँ. Yes, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा कर देगा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन viruses can self replicate and even corrupt data in a computer system. मतलब वही चीज है, थोड़ा सा बस एलोबरेट आप कर सकते हैं.
ठीक है। अच्छा जी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम अ वायरस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डेटा लॉस, उकाशा ने बताया कि हार्डवेयर फॉल्ट, बुहान ने बताया हार्डवेयर फॉल्ट। ठीक है, मैं फातिमा वाले आंसर के साथ जा रहा हूं, एक्सीडेंटल डैमेज। वो हार्डवेयर फॉल्ट इज एक्चुअली एक्सीडेंटल डैमेज, ये वो आपके पास एक्सीडेंटल डैमेज डेटा डिलीटेड बाय मिस्टेक। अच्छा भाई, इसकी प्रिवेंशन क्या होगी? परफेक्ट रोहान, आज तो बड़े भाई तुम ट्रैक के ऊपर हो, बड़े आंसर कर रहे हो, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, सो टेकिंग periodic backup of data. So taking periodic backup of the data can prevent from the accidental loss and hardware fault. Of course, hardware fault से भी आप लोग बच सकते हैं. Illegal access. So that's an easy one. ये तो आसान सा एक आ गया आपके पास. This is anyone? Illegal access to data. Reason can be ठीक है. So hacking can be used to access someone's system without permission. Acha ji, we can use a firewall, of course, yes. And we can also use anti-hacking software as well. Strong ID and password, yes, yes, bilkul. So we can use anti-hacking software, we can use a strong ID password, we can also use firewall. So all answers are perfectly fine. You can write any one of them. कोई भी एक लिख दें आप लोग. And this completes our question. अच्छा, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है बच्चों, 2000 आई थिंक 13 या 2012 का शायद ये क्वेश्चन है. अब तो उस वक्त आप लोग का सिलेबस का कोड भी डिफरेंट था. दैट वाज कंप्यूटर स्टडीज 7010. तो बड़ा पुराना क्वेश्चन था, लेकिन अगेन वायरस, फिशिंग, फार्मिंग उस वक्त भी थी, आज भी है. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन अ पीसी टू गैदर डाटा अबाउट द यूजर, इट मॉनिटर्स एवरी की प्रेसेस. तो एनीवन? वैसे वापस रेप्लिकेट हो रही है आपके पास. दिस इज कॉल्ड, आपको मॉनिटर करता है आपके सिस्टम को, स्पाईवेयर. थैंक यू फातिमा. द नेक्स्ट वन इज जंक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो बच्चों, जंक ईमेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट स्पैम. ऑल्दो स्पैम इज नॉट डायरेक्टली योर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन अगेन मैं आप लोग को बता रहा था कि थोड़े पुराने क्वेश्चंस हैं. सो पहले स्पैम वाज आल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो वहां से हम लोगों ने पिक किया हुआ है भाई. सेंडिंग एन ईमेल दैट क्लेम टू बी लेजिटिमेट, फेक ईमेल. सो फेक ईमेल that will be phishing. Perfect. Malicious code on a PC or a server, this code redirects to a fraudulent website. मतलब फेक वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाता है. दैट इज फार्मिंग. थैंक यू काशा. Act of locating and possibly exploiting a wireless network by touring an area. This requires a laptop with relevant software and an antenna. मतलब आप एक वायरलेस नेटवर्क को हिट कर रहे हैं, इलीगल एक्सेस कर रहे हैं एक वायरलेस नेटवर्क को. सो दैट इज वॉर ड्राइविंग. Information that a website stores about a user, and this is the last one, that will be cookies. Cookies are the small text files आपके ब्राउजिंग की
हिस्ट्री को मेंटेन रखती हैं, ट्रैक मेंटेन करती हैं कि व्हाट यू पीपल आर डूइंग। सो ये सारी इंफॉर्मेशन कुकीज अपने पास स्टोर रखती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों सॉल्व करने से पहले ये बता रहे हैं कि वो जो एसएसएल की नंबरिंग है ना, वो आप लोग को करनी है। यहाँ पे you need to number, you need to figure out the steps that we have learned about the session of SSL, secure socket layer का जो सेशन एस्टेब्लिश होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, if you people remember, काफी डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने पूरा सेशन, कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, नेक्स्ट वाई जेड। ठीक है, लेट्स कीप रिकैप दैट सेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, वेब ब्राउजर के अंदर आप लोग यूआरएल एंटर करते हैं, रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर को कि भाई मुझे सिक्योर वेब पेजेस भेज दो। वेब सर्वर अपना एसएसएल सर्टिफिकेट भेज देता है, भाई देखो मैं सिक्योर हूं। वेब ब्राउजर उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है। आफ्टर वेरिफिकेशन, अगर वो वेरिफिकेशन ऑथेंटिक होती है, देन वेब ब्राउजर एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि भाई ठीक हो, तुम ठीक हो, यू आर फाइन। तो वेब सर्वर एक एक्नॉलेजमेंट को एनक्रिप्ट करके भेजता है यूजिंग द सेशन कीज, टेम्पररी सेशन कीज से एनक्रिप्ट करता है। अगर आपके वेब ब्राउजर ने उस सेशन कीज को डिक्रिप्ट कर लिया, तो आपके पास एंड टू एंड सेशन क्या होता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। सो दिस इज द फंडामेंटल रूल्स, these are the fundamental principles of the SSL session, how the session begins। अब ये बता रहे नंबर 1, web browser attempts to connect to a website which is secured by SSL। web server sends back web browser a copy of its SSL certificate। web browser requests the web server। तो बच्चों पहले क्या होता है, this is the second step, web browser requests the web server to identify itself। then वो क्या करता है, अपना सर्टिफिकेट सेंड करता है। then web browser check the SSL certificate। fourth, then web server will then send back some acknowledgement to allow the SSL encrypted session to begin। and the last one बच्चों, the encrypted data is shared securely between the web browser and the web server। so हम लोगों ने जो क्लास में सारे स्टेप्स पढ़े थे, अगर मैं आप लोग को शो करूं, सिक्योरिटी सिक्योरिटी वेयर इज सिक्योरिटी, हियर यू गो। तो हम लोगों ने जो क्लास में स्टेप्स डिस्कस किए थे बच्चों, वही स्टेप्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, रिकॉल हो रहे हैं। बस आप लोग के पास थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज हो रही है, ऑफ कोर्स एग्जामिनर वर्डिंग तो चेंज करेगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए आप लोगों को, लेकिन ये स्टेप वही है आप लोग के सारे। ठीक है, कि एंटर यूआरएल इन द वेब ब्राउजर, रिक्वेस्ट फॉर सिक्योर वेब पेजेस, देन रिस्पॉन्ड टू एसएसएल सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है, एक्नॉलेजमेंट जाती है, एनक्रिप्टेड एक्नॉलेजमेंट जाती है, डिक्रिप्ट होता है, और आपका सेशन क्या होता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज स्टेप्स, याद होने चाहिए भाई। ठीक है, क्लास के जो लेक्चर्स है ना, वो तो बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लेगा। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो क्लास के सारे लेक्चर्स हैं, दे आर बीइंग अपलोडेड। एक बच्चा कल उसका मॉक था, तो ही वाज अनएबल टू फाइंड द लेक्चर्स। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ लेक्चर्स कहाँ पे अपलोडेड है। भाई मैं ही हूँ भाई, सर मैं की क्लास ले रहे हैं, कोई और नहीं ले रहा। ओ लेवल, ओ लेवल में आएगा बच्चों, आफ्टर कमिंग टू ओ लेवल, ये रहे मैक क्लास लेक्चर्स, ऑल द लेक्चर्स आर बीइंग अपलोडेड। इफ यू वांट टू शेयर, आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अच्छा है, पढ़ लेगा कोई भाई, फायदा हो जाएगा। पीडीएफ्स बनी हुई है पूरी। ठीक है, सो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम हियर एंड यू कैन यूज दीज नोट्स। सबसे पहले इन नोट्स से तैयारी करनी है, फिर कुछ और चीज देखेगा। ठीक है, सो सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए, और फिर बाकी जो स्टफ है वो भी मैं अपलोड करता रहूंगा, लाइक फास्ट ट्रैक, और जो क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, तो वो भी मैं पीडीएफ की फॉर्म में शेयर करता रहूंगा। एंड ऑल ऑफ कोर्स द लेक्चर्स आर आल्सो बीइंग अपलोडेड, वो भी सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं आपके पास। अगर कोई चैप्टर रिवाइज करना है, यू कैन रिवाइज दैट चैप्टर फ्रॉम हियर। अच्छा जी, मूविंग अगेन बैक टू आवर फास्ट ट्रैक।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अब ये बोल रहा है बच्चों, you need to write the statement about the cookies. They are form of spyware. True, false? They are form of spyware. True, false? Perfect, false. They are used in advertise. They are only used in advertising. So this is also false. अच्छा, अगर ये MCQs के अंदर ये only का वर्ड नहीं होता तो ये true होता बच्चों. ये टिक वाले ऑप्शन के अंदर अगर only का वर्ड नहीं होता तो ये true होता. लेकिन since they are not only used in advertising, so this is false. They are used to track browser use. Yes, of course. They act in the same way as a virus. No, of course not. False. A DOS attack coming from a large number of IP addresses, making it hard to manually filter or crash the traffic from such sources, is known as, anyone? कोई बच्चा मुझे बताएगा? DOS attack आ रहा है from large number of IP addresses. No, Fatma, no. DOS attack is not the right answer. DOS attack is not the right answer. Double D DOS attack. Distributed denial of service attack. अगर आपके पास DOS attack किया जा रहा है from more than one system, so that is called double D DOS attack. Distributed denial of service attack. ठीक है? Moving forward. Okay, ji. Now you need to write the name of the term being described. Software that anyone can download for free from the internet and then use without having to pay any fees. The usual copyright laws are being applied and the user license is important. So this is freeware. The next one, software that gives a user a chance to try it out free of charge before actually buying it. So that is shareware. Software where the user has freedom to run, copy, change, adapt it. So these softwares are called free softwares. Set of principles that regulates the use of computers in everyday life. This covers intellectual property rights, privacy issues, and the effect of computers on society in general. So this is the definition for ethics. The last one, taking someone's idea or software and claim that the idea or the software code were created by the taker. So Ruhan ne bata diya sir, this is called plagiarism. Okay, so these were the answers. I think this question was from October November 2016 or 15. बड़ा पुराना सवाल है ये भी आपके पास. ठीक है, moving forward. Dash tries to formulate a web resource occupied or busy its users by flooding the URL of the victim with unlimited requests. So this is, of course, DOS attack. The double D DOS attack with 20 to 40 gigabits per second is enough for totally shutting down a majority network infrastructure. Yes. So बच्चों, इतनी bandwidth is more than enough कि आपके वो network को damage कर दे. ठीक है? Question number 8. Software source code can be freely accessed and modified. तो modified क्या होता है भाई? Free software. All the features of the full version of the software are not available. That is shareware. Original software is subject to all copyright laws. अच्छा, वैसे एग्जामिनर ने बच्चों ये freeware के ऊपर आंसर किया हुआ है, लेकिन copyright laws are being applied on every software. मतलब ये कोई particular नहीं है कि freeware के ऊपर ही सिर्फ apply किया जाता है. Copyright laws are being applied on the free software as well.
copyright laws are being applied on the shareware as well. Copyright laws are being applied on the open source software as well. तो कॉपीराइट लॉस तो हर जगह अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन आपका एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो गया कि फ्री सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉरी फ्री वेयर के ऊपर ही कॉपीराइट्स आर बीइंग अप्लाइड. सो चलें, वी आर गोइंग टू राइट दैट, लेकिन आप लोग की नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि copyright laws are being applied on every software that we have. ठीक है. The last one, it is possible to distribute the modified version. Anyone? आप लोग बता दें. The last one. Let's see. कौन बता दे भाई? The last one. It is possible to distribute modified version and copies of the software to friends and family. No, the last one is free software, freeware नहीं. Modified आ गया ना, देखिए. Keywords pick किया करें. You have to pick the keywords modified version. The modification is only allowed in free softwares. ठीक है. अच्छा जी, अब बच्चों एक सवाल आ गया कि now you need to complete the TLS header. तो जरा कंप्लीट करते हैं TLS header को यहाँ पे. The first layer is called handshaking layer, and the next layer is called record layer. In record layer, we are having only one protocol, that is called record protocol, and in handshaking layer, we are having handshake protocol, we have alert protocol, and we have cipher change protocol. Now, a network layer firewall works as नेटवर्क लेयर के ऊपर बच्चों आपके पास वैसे जनरली फ्रेम फिल्टर्स किए जाते हैं. खैर ये क्वेश्चन आप लोग अभी स्किप कर दें, आप लोग के डोमेन में नहीं है. ठीक है, छोड़ दें इस वाले को. हाँ ये अच्छा है. अ फायरवॉल इज अ हार्डवेयर, अ सॉफ्टवेयर, कैन बी अ सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर एज वेल, कैन नीदर बी अ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और ब्ला ब्ला ब्ला. सो एनीवन? दो बच्चों ने तो सही आंसर दे दिया. एनीवन एल्स? ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने तकरीबन सही आंसर कर दिया मेरे पास यहाँ पे. सो यस, ऑफ कोर्स दिस इज सी. दिस कैन बी अ हार्डवेयर एंड दिस कैन बी अ सॉफ्टवेयर एज वेल. तो फायरवॉल आपके पास हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है भाई. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब अच्छा जी, अब देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर दैट इज कॉल्ड एथिक्स. जनरली आपके एग्जामिनर ने इस टाइप का क्वेश्चन आप आज तक कभी नहीं आया पास्ट पेपर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. सर मतलब क्या हुआ? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको एक सिनेरियो गिवन है, यू नीड टू जज कि ईदर दिस प्रोसेस इज एथिकल और दिस प्रोसेस इज अनएथिकल. तो आप लोग को एक सिनेरियो गिवन है, आप लोग को सिनेरियो देखते हुए जज करना है कि ये एथिकल है या अनएथिकल है. ठीक है. और 8 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करे थे IEEE के: पब्लिक, क्लाइंट, एम्प्लॉयर, प्रोडक्ट, जजमेंट, मैनेजमेंट, प्रोफेशन, कोलीग्स एंड सेल्फ. सो ये आई टोल्ड यू पीपल कि ये हेडिंग आप लोग को माइंड में होनी चाहिए, बिकॉज IEEE के रूल्स जो हैं, जो एथिक्स हैं, वो इन 8 प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आपके डिपेंड करते हैं. सो नाउ यू नीड टू जज कि एक प्रोसेस एथिकल है या अनएथिकल है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, Tom has received some phishing emails. He reported this to the bank they were supposed to have come from. So बच्चों, this process is ethical or unethical? What Tom has done, ये ethical है या unethical है? ठीक है, थैंक यू फातिमा. फातिमा ने बताया सर टॉम ने एक एथिकल एक्टिविटी करी है, दिस इज नॉट अनएथिकल, एंड दिस फॉल्स अंडर द हेडिंग ऑफ पब्लिक. वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए, ताकि कोई और बंदा उससे अफेक्ट ना हो. ओके, द नेक्स्ट वन,
Tom has asked his manager if they will pay for him to attend a programming course. Ethical or unethical? आप लोग जज करें, आप लोग बताएं. ठीक है फातिमा, आपका आंसर ठीक है. उकाशा, आपका आंसर ठीक है. रूहान, देखो मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम्हें रूहान तुम्हें एक ट्रेनिंग के अंदर जाना है 10 दिन के लिए. अब तुम, अगर मैं तुम्हारा मैनेजर हूं, तुमने अगर मुझसे पूछ लिया सर पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है. वो अपने मैनेजर से ही पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, वो डिमांड नहीं कर रहा. अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता कि ही इज डिमांडिंग फॉर मनी, तो फिर गलत हो जाता बेटा. लेकिन वो पूछ रहा है, मतलब इट्स टोटली फाइन, एथिकल एक्टिविटी है. क्या हो गया, पूछ ही तो रहा है अपने मैनेजमेंट से. ठीक है, so B is also ethical and this will fall under the heading of management. Tom is testing beta version of new game software at work. He copies the software on CDRs and sells them to his friends. ये तो सही है, ये तो आप लोग बता सकते हैं. उकाशा खुश हो रहे हैं कि सर ये तो बिल्कुल सही कर रहा है टॉम ना. है उकाशा, एथिकल है ये. वेटिंग फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम उकाशा. ठीक है, ऑफ कोर्स दिस विल बी अनएथिकल. गलत भाई, गलत काम है. कैसे वो किसी और को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है, एंड दिस इज अगेंस्ट द प्रोफेशन. अपनी प्रोफेशन के साथ गद्दारी कर रहा है वो. Tom has completed the application forms to join the Chartered Institute for IT. So that is ethical. And अपनी सेल्फ की स्टडी कर रहे हैं, सो सेल्फ के अंदर फॉल करेगा. Tom finds it difficult to work with one of his colleagues. His way of dealing with this has been to refuse to speak with the colleague. So ethical, unethical. ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है. ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है और क्लास में काफी बहस भी हुई थी. भाई गलत कर रहे आप लोग. देखे ना, अभी फातिमा आपने ही लिखा कि दोस्त दोस्त के काम आएगा, और अब आप खुद ही बोलिए ये अनएथिकल है. तो भाई गलत, मतलब दिस इज एथिक. अच्छा सही तो लिख रहे हैं आप लोग. सॉरी सॉरी, आप लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं अनएथिकल. भाई अगर आप किसी किसी से आपकी कोई ऑफिस के अंदर कोई लड़ाई हो गई या प्रोफेशनल जेलसी होती है आपके पास, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बात नहीं करेंगे. नो, दैट्स रॉन्ग, गलत है. और रियल लाइफ के अंदर भी अगर आपकी किसी फ्रेंड से कोई कुछ कभी नाराजगी हो जाए, तो नो नीड, नो हार्म, बी काइंड, बी हम्बल. वैसे ही एक मैसेज दे रहा हूं मैं आप लोग को. दिस इज नॉट, दिस मैसेज डज नॉट बिलोंग टू कंप्यूटर एथिक्स. वैसे भी रियल लाइफ के अंदर भाई क्या हो गया, दोस्ती है ना, हो जाते हैं ऊपर नीचे, कुछ बातचीत हो जाती है खराब. सो जाएं, बात करें, रिफ्यूज कर दें, मतलब बी काइंड, और हमेशा अच्छे बर्ताव रखा करें. सो दिस इज बच्चों अनएथिकल. बात करनी चाहिए, एंड दिस विल बी फॉलिंग अंडर द हेडिंग ऑफ कोलीग्स. ठीक है. नाउ द लास्ट वन. टॉम्स मैनेजर हैड considered the testing of a new game was completed. Tom reported to his manager that he thought there were still bugs which needed to be rectified. Fine, बच्चों ethical activity है आपके पास टॉम की, and this will lie under the heading of judgment. ये टॉम की जजमेंट है कि still there are bugs. ठीक है, परफेक्ट. सो देखिए इस टाइप के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैं एग्जामिनर होता मैं तो जरूर देता भाई. लेकिन ए लेवल्स में एग्जामिनर फ्रीक्वेंट इस टाइप के क्वेश्चंस देता है एथिक्स के अंदर. सो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 2000 मई जून 2022 में एग्जाम के अंदर ये सवाल आ सकता है. ठीक है, तो फास्ट ट्रैक के अंदर वही सवाल करवाए जाते हैं जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बच्चों, दैट दे माइट कम इन द एग्जामिनेशन. पास्ट पेपर्स तो हम लोग करते ही रहते हैं. ठीक है ना, पास्ट पेपर्स तो हम लोग करते ही रहते हैं. So these are the questions that might come in the examination. Moving forward to the last question for today's session. Give 3 functions of a web browser. So मैंने यहाँ पे लिखा used to store cookies, history, bookmarks. ठीक है, further
can open multiple tabs at the same time. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, रोहन ये क्या बता रहे हो तुम? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या चीज? द मेन फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर इज कन्वर्ट्स HTML code into human understandable form. तो तीन फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए बड़े मेजर ऑफ अ वेब ब्राउजर. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. अच्छा जी, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ हैंडशेक लेयर. वो बोले TLS के अंदर वन ऑफ द लेयर इज हैंडशेक लेयर, एंड हैंडशेक लेयर को एक्सप्लेन कर दो. सो कर देते, कोई मसला ही नहीं है. यूज टू create end-to-end connection, alert user if web server is not authentic Another point can be encryption and decryption of data take place at this layer. A perfect reply to the examiner by moving forward. Identify other layer of the TLS protocol. So we know the next layer is record layer. Identify another protocol that can be used to transfer data securely. SSL, secure socket layer, or you can also write HTTPS. So you can name any one over here. आखिर में बता रहे बच्चों, Meena visits a website to buy products for her business. The browser uses a small file to store, and a small file also stores her logs. So that file is called cookies. अच्छा, कुकी का साइज बताए कोई बच्चा मुझे? रिवीजन हो रहा है ना, अच्छा है. कुकी का मिनिमम मतलब एक एवरेज साइज क्या होता है? एक ही साइज होता है कुकी फाइल का. व्हाट इज द साइज ऑफ द कुकी फाइल? 4 KB. रोहान, थैंक यू. सो दैट्स इट. यहां पे बच्चों हमारे पास सिक्योरिटी के क्वेश्चन भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं. ठीक है, सिक्योरिटी एंड एथिक्स के हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस परफॉर्म करे. अब हमारे पास दो टॉपिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं. वन ऑफ द टॉपिक इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द अदर टॉपिक इज लॉजिक गेट्स. तो इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग क्लास. और मैं आप लोगों को ईयरली भी, इसके बाद फिर हम लोग ईयरली पास पेपर्स के ऊपर आ जाएंगे. हम लोग सारे ईयरली भी सॉल्व करते रहेंगे ताकि मैक्सिमम हमारे पास हर डोमेन के अंदर हर चीज हमारी बिल्कुल रॉक सॉल्व होनी चाहिए. तो ईयरली के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग का भी आइडिया दूंगा कि हाउ टू एक्चुअली राइट द आंसर. आपका आंसर किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस रिदम में आप लोग एग्जामिनर को एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट रिप्लाई टू द एग्जामिनर. क्योंकि जनरली पेपर 1 में आप लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं. और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर भी डिवाइसेस हैं जो हम लोग को अभी फर्दर डिटेल में स्टडी करनी है. तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. टेक केयर एंड स्टे सेफ.